Hello friends, good morning. Today I am going to discuss cost of capital. Cost of capital. Question number 1, ABC Limited issued rupees 10 lakhs 8% debentures at par at a discount of 7% and at a premium of 10%. You are required to calculate cost of debt. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट. हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू cost of debt equal to I by NP into 100, where I denote amount of interest, NP denote net proceeds. In option A, amount of interest, rate of interest on debenture bearing 8%, therefore amount of interest on rupees 10 lakhs, amount of interest on rupees 10 lakhs equal at the rate of 8% equal to rupees 80,000, and cost of capital, cost of debt, interest, annual amount of interest 80,000, and net proceeds, debentures are issued at par. Debentures are issued at par. What is meaning of par? When the issue price of debentures are equal to the face value of debenture, when the issue price of debentures are equal to the face value of debenture, are known as debenture issued at par. In this question, face value of debenture rupees 10 lakhs, face value of debenture rupees 10 lakhs, and issue in market at par. Therefore, net proceeds received from issue of debenture, net proceed from the issue of debentures rupees 10 lakhs. Therefore, cost of capital in case of A, annual amount of interest amount 80,000, net proceeds rupees 10 lakhs multiplied by 100 equal to 8%. नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड, when debentures are issued at a discount of 7%, debentures are issued, amount of interest are always payable at face value, whether डिबेंचर आर इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. आप डिबेंचर को किसी भी वैल्यू पर आप इशू करेंगे, चाहे वो पार वैल्यू होगा या प्रीमियम होगा या डिस्काउंट पर, इंटरेस्ट जब भी मुझे पे करना होगा वो किस पर पे करना होगा? ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. कितना है डिबेंचर का फेस वैल्यू? 10 lakhs. तो आपको कितने पर इंटरेस्ट पे करना है? 10 lakhs पे. तो नेक्स्ट, इन केस ऑफ issue of debentures at discount of 7%, amount of interest rupees 80,000, but net proceed from the issue of debentures equal to face value of debenture 10 lakhs but issued at a discount of 7%. Therefore, net proceeds 10 lakhs minus 7% of 10 lakhs are equal to 9 lakhs 30,000. 9 lakhs. Cost of capital, cost of debt. तो cost of debt equal to
annual amount of interest by net proceeds 9,30,000 multiplied by 100. 80,000 multiplied by 100 divided by 9,30,000 are equal to 8.60%. नेक्स्ट हमारे पास है when debentures are issued at a premium of 10%. when debentures are issued at a premium of 10%. जब आप डिवेंचर को किस पर इशू करने जा रहे हैं? प्रीमियम पर. तो प्रीमियम पर अगर हम लोग करने जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या कहा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर ऑलवेज पेबल ऑन फेस वैल्यू. ऑलवेज पेबल ऑन फेस वैल्यू. चाहे डिवेंचर पार पर इशू हो रहा है, प्रीमियम पर या डिस्काउंट, जब भी होगा वो किस पर पे करेंगे हम? फेस वैल्यू. तो इस केस में भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज 80,000 एंड नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर. फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स रुपीज 10 lakhs. फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स रुपीज 10 lakhs. बट इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. बट इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. Therefore, net proceeds 10 lakhs plus 10%. Issue of debentures at premium means when the issue price of debentures is more than face value. When the issue price of debenture is more than face value. Discount का मतलब है कम करके बेचना और प्रीमियम का मतलब है बढ़ा कर बेचना. तो कितना परसेंट बढ़ा दिया? ये 10%. When the face value of debenture, when the issue price of debenture is more than face value of debenture, therefore net proceeds 10 lakhs plus 10% of 10 lakhs are equal to rupees 11 lakhs. Therefore cost of debt equal to amount of interest rupees 80,000 divided by net proceeds 11 lakhs into 100. 80,000 into 100 divided by 11 lakhs are equal to 7.27%. Thank you friends.